Hi friends, welcome to your on channel J Gurdev English Literature. And guys, in today's videos, I'm just going to talk about Enlightenment age. The period of Enlightenment was from 1700 to 1798. Guys, before it, we have just covered our previous lecture, that was Restoration period. This is the video of Enlightenment age in the series of British हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम बात करने वाले हैं एनलाइटनमेंट एज की। तो बिफोर दैट एनलाइटनमेंट एज we will just would like to remind our previous video restoration is that there was a restoration of monarchy Charles II को वापस बुलाया गया था and his period was there, and today we will talk about enlightenment age. तो enlightenment age अगर हम बात करें तो period is there 1700 to 1798. Clear? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑफ द किंग हु वाज द किंग एट दैट टाइम। इस समय इस वक्त किंग कौन थे? तो किंग वाज देयर फ्रॉम 1714। आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम 1714। जॉर्ज फर्स्ट 1714 to 1727। जॉर्ज सेकेंड 1727 to 1760। George III 1760 to 1820, and the fourth is George IV, that is from 1820 to 1837. This is enough history of the monarchy that who was ruling at that time. So let's talk about important facts. First of all, we are able to see here that age of enlightenment is period 1700 to 1798. This age is divided into two periods. The first one is called Augustan age and the second one is age of transition. If we talk about Augustan age, period was there from 1700 to 1750, and age of transition that was from 1750 to 1798. First of all, we will come to know that why it is called Augustan age. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसे ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, इस एज को ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, एंड एज ऑफ ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है। तो द 18th century is called the age of transition because it was a period of wisdom and scientific thought. And actually Augustan age के पीछे कारण ये है कि द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो भी राइटर्स थे, दे यूज्ड टू कॉपी द रोमन राइटर्स। एंड जो रोमन राइटर्स जो थे क्लासिकल रोमन राइटर्स, जिन्हें कॉपी किया जा रहा था इस एज के राइटर्स के द्वारा। तो व्हाट वाज देयर दैट क्लासिक रोमन जब लिख रहे होते थे एट दैट टाइम द किंग हु वाज रूलिंग एट द रोमन पीरियड, तो दैट वाज किंग ऑगस्टस के नाम पे दिस पीरियड इज देयर, दैट इज ऑगस्टन एज. We will come to know properly also in the few steps ahead. Okay, so let's talk about this age, that this age is called the age of transition also, and it was a period of wisdom and scientific thought. इस समय की बात क्या है कि ये जो पीरियड थी वो विजडम, ज्ञान और साइंटिफिक थाउट चल रही थी. देयर वॉज नो what can be spoken that अनबिलीवेबल, दैट मीन्स पीपल कैन नॉट बिलीव विदाउट एनी रीज़न. जब तक कोई रीज़न ना हो लोग इस वक्त विश्वास नहीं कर सकते थे बिकॉज नॉलेज वॉज देयर बिफोर इट. अगर हम इसके पहले एज की बात करें तो और एज में क्या हो रही थी, दैट पीपल वर नॉट सो एजुकेटेड, पीपल वर नॉट सो नॉलेजेबल. पीपल लोगों के पास जानकारी न होने की वजह से दे यूज्ड टू बिलीव चर्च, दे यूज्ड टू बिलीव पोप, वट एवर दे यूज्ड टू से. पोप चर्च जो भी कहते थे
कॉमनर्स आराम से मान लेते थे बिकॉज उनके पास कोई जानकारी नहीं हुई थी, ना हुआ करती थी। बट इस वक्त होते होते क्या था कि लोग एजुकेटेड हो रहे थे, एजुकेटेड हो भी गए थे, एंड दैट इज़ वाई दे डिड नॉट बिलीव एनीथिंग विदाउट एनी रीजन। सो मैंने जैसे कि आपको बताया दैट फ्रॉम 1700 टू 1750 इट इज़ कॉल्ड ऑगस्टिन एज, एज वेल एज इट इज़ कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज एंड एज ऑफ पोप। तो मैंने तो बता दिया कि ऑगस्टिन एज क्यों कहते हैं। नाउ वी विल कम टू नो दैट व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू क्लासिकल एज। तो न्यू क्लासिकल एज मीन्स दैट न्यू मीन्स कॉपिंग, न्यू मीन्स ये होता है कॉपिंग समवन, दैट मीन्स नकली। दिस इज नॉट एनी WO, न्यू मीन्स नया, ये नया वाला नया नहीं है, ये नकली वाला नया। ओके तो न्यू क्लासिकल दैट मीन्स कॉपी करना, दैट इज नकली, ओके डुप्लीकेट। And as well as this is known as in the literature, English literature, that is called age of pop. इंग्लिश लिटरेचर में इसे एज ऑफ पॉप कहते हैं बिकॉज ही वॉज द प्रोमिनेंट राइटर। यू माइट हैव हर्ड ऑल्सो द रेप ऑफ लॉक, राइट। तो एज ऑफ पॉप बी जस्ट बिकॉज ही वॉज अ प्रोमिनेंट राइटर एंड ऑन हिज नेम दिस एज इज ऑल्सो नॉन एज ऑफ पॉप। Clear it is? Okay. Moving to the next, the English writers of this period imitated the classical Roman writers who were writing during the reign of the King Augustus. तो मैंने आपको बताया भी कि ऑगस्टन एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड के जितने भी इंग्लिश राइटर्स थे वे रोमन राइटर्स को कॉपी कर रहे थे, और रोमन राइटर्स के जो किंग थे उनका नाम था किंग ऑगस्टस, इसलिए इस पीरियड का नाम भी होता है ऑगस्टन पीरियड। Okay, so moving to the second, 1750 to 1798. This is called age of transition, pre-romantic age and age of Johnson. तो age of transition क्यों कहा जाता है? Because this period what actually transition means परिवर्तन। इस समय परिवर्तन हो रही थी, that means this age was completely was being changed slowly it was being changed, वो परिवर्तित हो रही थी, that is why it is called age of transition, pre romantic period age। तो ये क्या है ना कि रोमांटिक से पहले दिस एज वॉज देयर, तो दिस इज नॉन एज प्री रोमांटिक एज, क्योंकि रोमांटिक की जो जड़ें थी उनकी बीज कहीं ना कहीं इस एज में रोपी जा रही थी, बोई जा रही थी, दैट इज वाई ऑल्सो इट इज कॉल्ड प्री रोमांटिक एज। As well as the prominent writer of this age was age of Johnson, that is Dr. Samuel Johnson, on his name, उनके नाम पे इस एज का नाम पड़ता है इन द इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज एज ऑफ जॉनसन। द पीरियड वॉज अफेक्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये जो होती है 1750 टू 1798, ये बिल्कुल 3 रेवोल्यूशन से प्रभावित होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द नेक्स्ट, historical events. Now we will talk about some historical events. ये historical events क्या हो रहे थे? तो मैंने previous videos में भी बताया था that this was the time, this was the high time of rising two political parties. The first one was Whig and the second one was Tory. Two political parties. As well as in this age a political acts came, एक political acts आया in 1707. there was an act of union in 1707, 1707 में act of union आती है, in which Scotland merged with England forming the Great Britain। और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के साथ स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मर्ज कर दिया जाता है और इस प्रकार से बनाई जाती है द ग्रेट ब्रिटेन। क्लियर? Okay, the next in 1737 a licensing act was passed to censor and control theatres. As a result people started writing novels। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस वक्त क्या होता है ना कि
पीपल वर सो क्रेजियस टू राइट अ नॉवल। उस समय के राइटर्स जो थे वो नॉवेल्स पे लिखना बहुत पसंद कर रहे थे बिकॉज ऑफ एक लाइसेंसिंग एक्ट पास हो गया था एंड थिएटर्स को कंट्रोल किया जा रहा था, प्लेज ड्रामाज को कंट्रोल किया जा रहा था एंड दैट इज़ वाई राइटर्स ऑफ दैट एज, उस समय के जो राइटर्स थे उन्होंने अपना इंटरेस्ट नॉवेल्स लिखने में दिखाया बिकॉज देयर वॉज नो बाउंडेशन टू राइट अ नॉवेल. So this was a high time to write the novel also. In 1798, Ireland was included in Great Britain. 1798 में आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड किया जाता है. पीपल स्टॉप बिलीविंग मैजिक एंड सुपर नेचुरल फोर्सेस ड्यू टू डिस्कवरीज. और इस वक्त क्या था कि डिस्कवरी हो रही थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पीपल वर एजुकेटेड, पीपल एजुकेटेड भी थे, इसलिए मैंने बताया ना कि मैजिक एंड सुपर नेचुरल फोर्स में वे लोग बिलीव करना बंद कर चुके थे क्योंकि दे नीड एवरीवेयर अ लॉजिक. हर जगह उन्हें एक लॉजिक चाहिए थी, एक रीज़न चाहिए थी कि इफ़ इट इज़ हेयर, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है. पहले क्या होती थी कि पीपल जस्ट बिलीव, चर्च ने बोल दिया हाँ भाई सही है, चर्च ने कहा तो सही है, लेकिन एक्चुअली दैट टाइम दे वर नॉट एजुकेटेड. वे लोग उसमें एजुकेटेड नहीं थे, बट नाउ द पीपल वर एजुकेटेड सो दे स्टॉप्ड बिलीविंग. इट वॉज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. और साथ ही साथ यही वक्त ऐसा था जब प्रोज बहुत लिखे जा रहे थे एंड प्रोज एज वेल एज रीजन. राइज ऑफ नॉवेल्स मैंने बताए. पॉलिटिकल राइटिंग बिकेम वेरी पॉपुलर. इस वक्त वीक और स्क्रिबलर्स टॉरीज जो मैंने बताया, विक्स एंड टॉरीज पार्टी में बहुत ही पॉलिटिकल राइटिंग भी फेमस हुई थी बिकॉज द राइटर्स वर फ्रॉम बोथ ऑफ द एजेस, बोथ ऑफ द पार्टीज, तो एक दूसरे पे कटास भी करते थे. पॉलिटिकल क्लब्स एंड कॉफ़ी हाउसेस वर इंट्रोड्यूस्ड, दे बिकेम अ ग्रेट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. साथ ही साथ इस एज में अ वेरी ब्यूटिफुल आउटस्टैंडिंग थिंग वॉज इंट्रोड्यूस, दैट वॉज कॉफ़ी हाउस. कॉफ़ी हाउस को इंट्रोड्यूस किया गया था, पॉलिटिकल क्लब्स इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि ये कॉफ़ी हाउसेस में जहाँ पे सोशल लाइफ में लोग मिला करते थे, चर्चा किया करते थे एंड दिस बिकेम अ ग्रेट पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. फेमस पॉलिटिकल क्लब्स की बात करें तो देयर वर टू क्लब्स. द फर्स्ट वन वाज देयर स्क्रिबलर्स एंड किट कैट क्लब. ओके, द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, डिक्शनरी. इस एज में डिक्शनरी भी आती है फ्रॉम सैमुअल जॉनसन. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पब्लिश द इंग्लिश डिक्शनरी इन 1755. 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी आती है एंड दिस वॉज अ ग्रेट वर्क ऑफ दिस एज. Now we will talk about the literary works, the major writers and their works. So major writers की अगर हम बात करें, if we talk about the major writers of this age, then first of all we have that is Alexander Pope. I hope you know very well Alexander Pope. I hope, मुझे पता है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अलेक्जेंडर पॉप अच्छे से पता होगा बिकॉज ऑफ द रेप ऑफ लॉक. एंड एक्चुअली अलेक्जेंडर पोप वॉज वेरी फेमस टू यूज हीरोइक कॉपलेट इन हिज वर्क. अपने वर्क में वो भर भर के हीरोइक कॉपलेट का इस्तेमाल करता था. एंड मैं फ्यू और भी वर्क्स बताना चाहूँगा, यू कैन नोट इट डाउन. The rape of Locke, already it is mentioned there. The Dunciad. Third number, Epistle to Dr. Arbuthnot. Fourth, An Essay on Criticism. And fifth one is there, An Essay on Man. These are the important works of Alexander Pope. ये important works हैं. Second we have that is Jonathan Swift. की अगर हम बात करें तो his most important work is there, The Battle of the Books. And the second is A Tale of Tub. Third is Gulliver's Travels. And the fourth one is A Modest Proposal.
A Modest Proposal. He was also great writer of this age. The next we have, that is Daniel Defoe. Daniel Defoe, if we talk about Daniel Defoe, then his most important work is रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन क्रूसो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि इट इज़ द फर्स्ट नॉवेल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. Actually, many people are there, many historians are there, they believe it. And it is a novel. It was very fantastic novel. It just इन्होंने ब्रिटेन में एक इस नॉवेल ने तहलका मचा दिया था. पीपल वर सो क्रेजियस आफ्टर राइटिंग द नॉवेल, आफ्टर सीइंग द प्रोग्रेस. इस प्रोग्रेस को देखने के बाद लोगों के मन में चाह होती है कि दे ऑल्सो राइट नॉवेल्स. The next we have Dr. Samuel Johnson, and his most important work is The Vanity of Human Wishes. The Vanity of Human Wishes, as well as The Lives of the Poets. इन्होंने The Lives of Poets में 52 poets को बायोग्राफी को लिखा है. Okay, the next we have Samuel Richardson. Samuel Richardson is also very important. Pamela, the most important work, Pamela and Clarissa. Pamela and Clarissa लिखने के बाद Henry Fielding little bit he get upset, वो नाराज हो जाते हैं. And in the reply of Pamela, he wrote Joseph Andrews. जोसेफ एंड्रूज, देर वॉज अ स्मॉल कैरेक्टर इन पमेला. तो उस जोसेफ एंड्रूज में ही इन्होंने एक पूरी नॉवेल लिख दी. एंड इन द क्लैरिशा ही रोट टॉम जॉन्स. द नेक्स्ट वी हैव ओलिवर गोल्डस्मिथ. ओलिवर गोल्डस्मिथ, the work is, the most important work is The Traveler and the Deserted Life. The next we have Thomas Gray. The important work is Elegy Written in a Country Churchyard. It is mistyped here. Elegy written will be there. Written in a country churchyard. The next we have, and the last important, that is William Black, Songs of Innocence, Songs of Innocence, Songs of Experience. Third number, Marriage of Heaven and Hell. Fourth, Vision of Daughter of Albion. Fifth, Milton, a poem in 2 books. These all works are of William the Black. William Black. Is that clear? So I hope so you like the presentation. If you like the presentation, hit the bell icon and subscribe my channel so that you never miss an update. And as well as, if you have any suggestion, if you have any queries, put it in the comment box so that I'll be able to sort it out. Thanks for watching. Thank you. Have a